एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं रुचि शर्मा। पिछले कुछ महीनों से हम एनएफटी सेल्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगातार गिरावट देख रहे हैं। ब्लू चिप एनएफटीज के फ्लोर प्राइस गिर रहे हैं। टॉप एनएफटीज मार्केट प्लेसेस रॉयल्टीज को ऑप्शनल कर रही हैं, जिस पर एनएफटी इंडस्ट्री बटी हुई नजर आ रही है। तो आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और कब लौटेगी एनएफटी मार्केट की खोई चमक? इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निफ्टी मीडिया की फाउंडर रक्षिता फिलिप। वेलकम टू 3 टीवी रक्षिता। पिछले साल अक्टूबर में एनएफटी रॉयल्टीज का मुद्दा सामने आया। उससे पहले नियम से क्रिएटर्स को रॉयल्टीज दी जा रही थी, लेकिन अचानक अक्टूबर के बाद मार्केट प्लेसेस इस मुद्दे पर बटी हुई नजर आई। कुछ मार्केट प्लेसेस ने रॉयल्टीज को ऑप्शनल कर दिया, तो बाकी मार्केट प्लेसेस ने अपनी पसंद और फायदे के हिसाब से 0.5% से लेकर 5% के बीच रॉयल्टीज देने का मन बनाया। खैर, मुद्दा गरमाया तो मार्केट प्लेसेस वापस एक वाजिब रॉयल्टी परसेंटेज देने को राजी हो गई। लेकिन अब रॉयल्टीज का ये इशू फिर से उभर गया है और पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। जहां ओपनसी पूरी तरह से रॉयल्टीज को ऑप्शनल कर रहा है, तो लुक्स रेयर और X2 Y2 जैसी एनएफटी मार्केट प्लेसेस भी रॉयल्टीज देने से अपना पल्ला झाड़ रही हैं। ऐसे में युगा लैब्स और रेडेबल ने ओपनसी को ब्लॉक करने का फैसला कर लिया है। रक्षिता, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्रिएटर रॉयल्टीज के इस मुद्दे का पूरी एनएफटी इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? So I think the royalty debate has been happening for a while now. If you go back to the history of how NFTs happened and everything, the whole reason why artists got into the space the first time was they saw a chance of creating generational wealth with their art. At some point, whenever an artist start off on their creative journey, they don't actually make crazy sales right in the beginning, unless there's some sort of prodigy or something like that. That kind of return comes later. So when you talk about artists like Beeple or Xcopy or what do you call it, Twin Flames guy Jay Alvarez, those guys actually made serious profits through royalties from secondary sales. And that's how most artists made serious money in the space. And when you take that aspect away, it's just disappointing to artists, because I feel they are the ones who built culture into NFTs. They are the ones who are bringing in the supply, right? And right now, when you talk about platforms, they are only focused on bringing in more traders, being more scalable, being more profitable, and things like that. And those usually don't really align with the benefit of the artists. So I think that's what's happening right now. And the way it looks like this is moving towards a direction where every project might have their own marketplace, because we just are not able to trust marketplaces to do what's good for the community. एनएफटी मार्केट की करंट सिचुएशन काफ़ी असमंजस में डालने वाली है। एक तरफ एनएफटी सेल्स, एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम और एनएफटी फ्लोर प्राइस गिर रहे हैं। एक एक करके एनएफटी प्लेटफॉर्म्स शट डाउन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स, स्पोर्ट्स लीग्स और फिल्म इंडस्ट्री एनएफटीज को ना सिर्फ एम्ब्रेस कर रही हैं, बल्कि धीरे धीरे इन सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। रक्षिता, आपसे जानना चाहेंगे कि एनएफटीज किस तरह से क्राउड फंडिंग, मूवी राइट्स और मर्चेंडाइज में हेल्प कर रही हैं और इंडिया में इसके प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं? Film industry, that's an interesting question. So initially when NFT started, we had our own film-based NFT project, because we used to have a production house back in the day, and we were already making content and ads and e-learning videos. When we got in, we saw it as a way to democratize our studio, in the sense have more what do you call it, team-led projects, have funding for them, crowdfund projects, and basically get people to invest in a company in return for crowdfund a company and invest in the future of the company. But slowly, as I've been seeing the NFT space evolve, I realized that as far as NFTs, what kind of NFTs sell and what kind of NFTs find success, is concerned, I feel like small collections and, indie teams and indie studios are doing much, much, much better than bigger studios. And I think the reason why is because, when big studios enter the NFT space, they enter with a big project, long roadmap, everything, but they don't realize that the market is not stable enough to make a one-year plan. It doesn't work like that. You have to be on your feet. You have to be able to pivot. You need to be able to change as the market
changes, right? And big companies don't usually have the flexibility to do that, but indie companies are able to do that, right? So there are a few, like, projects such as Feature.io, there's Huxley, there's Lollipop Racing, there's Nawak Collective, and all these people have been experimenting with different forms of storytelling. Like, so Navak is creating like virtual experience music videos. So it's a music video in 3D where you can go experience things. If you translate it, further, you can actually create like immersive movie experiences and video experiences, and that is the direction they're going towards. They want to create full as, like feature films for artists in the future, which are completely 3D, right? The same way, what Feature.io is doing is Feature.io has been finding these small creators, people who want to give their NFT, stake their NFT and, turn it into a character in a movie, just different things like that. So in terms of IP, monetization, different forms of distribution, like there's a lot of experiment happening in this space. So I'm hopeful for the future of like indie films, indie games, and indie creators more than, like studios like finding actual success in the space. तो NFTs की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री, डेब्यूटांट डायरेक्टर्स, अपकमिंग एक्टर्स को अच्छा खासा फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही इंडिया में खासकर छोटे प्रोजेक्ट्स में इसके प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी ब्राइट हैं। रक्षिता, हमसे बातचीत करने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। इस खास बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।